And welcome to science class of 8th standard, conservation of plants and animals. So I have come with chapter 7 where we are going to study about conservation of plants and animals. What does conservation mean? Due to the increasing human being population and their need, plants' life and animals' life is in danger. And how can we keep them safe and keep the number of plants and animals those are in danger we can preserve? That's what we are going to study about. That is what conservation is. Okay? तो आगे बढ़ते हैं. 7th standard में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है that Paheli and Bhujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some others had heard about Kaziranga National Park, Lokchau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. These words, heavy words, big words you might have heard about. These are the names of wildlife sanctuary or national parks. What are these places? From the name you can make out. They are the name of national park or wildlife sanctuaries. You might have gone to zoo. Zoo is different from national park and wildlife sanctuary. In zoo, you keep the animals in cage, and that is for the entertainment purpose, right? But national park and wildlife sanctuaries are open place where animals can live safely and freely, having their natural environment. Okay? Now the question is, what is the purpose of making national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves? What is the need of their establishment? The need of the establishment of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves are to preserve, the main intention is to preserve the wildlife or the plantations, that is forest, and along with the forest the wildlife existing in the forest, the animals and birds, to preserve them. Why they have to be preserved? Because their lives are in danger. The factor of the danger, one of the factor is deforestation, and the causes of the deforestation we are going to study. Deforestation means cutting off the plants in large number, cutting off the forest, right? जब झाड़ियाँ काट डालते हो, जब आप ट्रीज़ काट डालते हो लार्ज नंबर पे, तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. फॉरेस्ट को ख़त्म कर देना, फॉरेस्ट में लगे पेड़ को काट डालना अपने नीड के लिए, that is deforestation. And deforestation is one of the reason for the life of animals to be in danger. प्लांट्स के लाइफ तो डेंजर तो होते हैं. आप काट डालते हो तो ऑब्वियसली दोज प्लांट्स और द ट्रीज़ विच आर टेकन लॉन्ग टाइम टू ग्रो, अगर आप उसको काट दो तो फिर से वो ट्रीज़ उगने में बहुत वक्त लगेंगे. यू कैन नॉट गेट बैक दोज प्लांट्स अगेन और ट्रीज़ अगेन क्विकली. सो इट्स अ डेंजर फॉर द ट्रीज़ ऑल्सो, and the animals which are surviving amidst those forests are in danger by if you cut the trees. Why do we cut trees? What is the need of? So चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms
is deforestation. इन एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस. हम डिफॉरेस्टेशन ट्रीज़ क्यों कट करते हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस लैंड मास की हमें ज़रूरत है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो फिर फैक्ट्री सेटअप के लिए, या तो फिर टूरिज़म पॉइंट बनाने के लिए कर रहे हैं. ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस. क्या है? तो ये पर्पसेस है. प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेतीबाड़ी के लिए. बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, जो मैंने आपको अभी बताया, घर और फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए. मेकिंग फर्नीचर्स और यूजिंग वुड एज फ्यूल, ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए वुड चाहिए होता है, या तो फिर फर्नीचर्स बनाने के लिए. ये जो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमें डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत, वुड की ज़रूरत पड़ती है. वुड के लिए आप क्या करोगे? फॉरेस्ट जाओगे जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ वुड मिलता हो, वहाँ पे आप जाओगे और वुड कट करोगे. तो इस तरह से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है. सो वन ऑफ द रीज़न इज़ डिफॉरेस्टेशन which has made the survival of animals and plants a question mark, a major threat for their survival. Because हमें survive करना है, mankind के survival के लिए हम क्या करते हैं? other living organisms, plants and animals के survival पर एक question mark लगा देते हैं. Okay children, now our next topic is consequences of डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन होने पर कौन सी दिक्कतें आएगी, या फिर व्हाट द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स मैनकाइंड इज सपोज टू फेस बाय डिफॉरेस्टेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ग्रेड स्टडीज, पहेली एंड भूजो try to recollect what they had studied in 7th standard, and they recalled the consequences of deforestation, and they remembered that the temperature will increase and pollution level on the earth will also increase. It will increase the level of carbon dioxide in the atmosphere, because when the trees are cut, the maximum consumption of carbon dioxide was done by the trees. So in the atmosphere, carbon dioxide will increase, and in the atmosphere, as the carbon dioxide increases, the global warming will take place, the temperature will increase. Groundwater level also will get lowered, because it is said that canopy of trees or forest brings in rain, and obviously the rain will decrease, rainfall will decrease in such barren areas, and so the balance of the nature will get disturbed. Not only that, on cutting of trees, what happens? The animals surviving in that habitat also will become homeless, and they will try to move out from the forest, and there is no life for the animals if they move out from the forest. There is no life for them outside the forest, because the environment or the whole situation is going to change for them. The fertility of the soil is also going to get reduced by the soil erosion. Due to the soil erosion, when the rainfall will occur, the soil which gets fixed by the roots of the trees will get eroded, will get loosened because of the cutting of trees. The soil will get loosened and will get eroded. Eroded मतलब वो धो जाएगा, धुल जाएगा. The upper layer of the soil will get washed away by the rain water, or the fertility of the soil will get removed. दूसरी ओर, on the second side, the increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. और reduction in rainfall क्या होगा? It will cause droughts. Drought मतलब famine. Famine का मतलब, drought means सूखा.
અથવા તો ગુજરાતીમાં કહીએ તો દુકાળ, જ્યાં પાણીની તંગી એટલી બધી થઈ જાય કે एवरीवेयर द वेजिटेशन विल गेट बर्न, बची कुची जो वेजिटेशन होती है, प्लांट्स जो होते हैं वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा. द लैंड सरफेस विल बिकम वेरी ड्राई, द अंडरग्राउंड वाटर लेवल विल गो डाउन, and the vegetation, loss of vegetation, because of loss of vegetation and loss of water, the animals and birds will start dying. Even human beings will, mankind will face problem, mankind को भी, human beings को भी problem होने लगेगी, because how long you can purchase water. Okay, so drought is a situation where the crisis of water arises for long period of time. जब बारिश नहीं होती, पानी मिलना बंद हो जाता है, ground level, water level underground goes down deep, and because of this reason what happens, remaining vegetations also get destroyed, and not only that, due to the loss of vegetation animals start dying. So drought is the situation that occurs due to the deforestation. Next we move on to desertification. Desertification मतलब सॉइल जो है वो लेस ह्यूमस होता जाएगा, उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, और ड्यू टू द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल को पकड़े रखने के लिए ट्रीज़ के रूट्स होते हैं जो सॉइल को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है. अगर वही ट्रीज़, वही प्लांट्स हम कट कर ले तो क्या होगा, द सॉइल इज़ गोइंग टू बी लूजन, and the loose soil gets eroded quickly by the blowing of air or flowing water, and this reason, due to this reasons, gradually the fertile lands get converted into desert. वो धीरे धीरे वो सॉइल लैंड ड्राई होता जाता है और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. व्हाट्स इट कॉल्ड? डेजर्टिफिकेशन. Deforestation also leads to a decrease in water holding capacity. Obviously, soil अगर लूज हो जाता है तो पानी को पकड़ के रख नहीं सकता for long time. Just you know that if we take clay, चिकना माटी ले लो या तो फिर सैंड ले लो, इन दोनों में से पानी किस में ज़्यादा टाइम रुकता है? तो क्ले में. मिट्टी गीली, चिकने, that is the sticky soil, clayey soil remains wet for long time. If we take sand, बालू ले लो या रेत ले लो, उसमें पानी छिड़को तो थोड़े शॉर्ट टाइम में this sand is going to get dried up. So water retaining capacity or holding capacity is more in fertile soil, alluvium soil or clayey soil. If the डेजर्टिफिकेशन टेक्स प्लेस तो क्या होता है, जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाता है और वो ग्रेजुअली इट गेट्स कन्वर्टेड टू सैंड, एंड सो व्हाट हैपन्स, इट लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. द न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सारे प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इट फेड्स अवे, इट रिड्यूसेस. In short, the balance of the nature, the quality of the soil, water cycle, everything gets disturbed. This is the consequences or the adverse effect occurs due to the deforestation. Now, how can we conserve the forest and wildlife? That will be our next topic.